Few days ago in June, a multi-day cloudburst centered on Uttarakhand caused devastating floods and landslides. Destruction of bridges and roads left about 1 lakh pilgrims and tourists trapped in the valleys, leading to the 3 most coveted pilgrimages of India. The calamity has left many people homeless and many have lost their lives. The special marathon was organized in condolence with the people who lost their lives. The funds collected will also be used in the rehabilitation process. उत्तराखंड है, इस दौर पे आपने देखा भी उत्साह है लोगों में, एक जोश है और वो कॉमन कॉज के लिए सब दौड़ रहे हैं और जिस तरह से हमारा एक प्रदेश एक स्पोर्ट्स पावर के रूप में बढ़ गया है, निश्चित तौर पे आज हर यूथ को एक जोश है जज्बा है ताकि हम अपने नोबल कॉज के लिए दौड़ें और निश्चित तौर पर यूथ को ये संदेश दूंगा कि आप जरूर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने कोचेज के साथ इस नोबल कॉज में आज जिस तरह से उन्होंने भाग लिया. The Himalayan tsunami has left Uttarakhand in shambles and the main occupation, that is tourism, has largely been affected. In such circumstances, the marathon is a well-thought idea. Bureau Report, DD News.